पिंडी इस्लामाबाद लाहौर में भी लोग मुहब्बती तो है लेकिन छोड़ते नहीं है यार। आपको पता है इम्पोर्टेड सिगरेट अभी जो है वो पाकिस्तानी सिगरेट से सस्ती है। लोग कहते हैं कि जी इमरान खान के साथ बड़ा बुरा किया। भाई जिससे आप भीख मांगने जा रहे हो उनको आप कह रहे हैं मैं क्या आपका गुलाम हूँ। सोचो आपके बेसिक घर में आपका मुलाजिम उठ के तुम समझते क्या अपने आप को, आप क्या करोगे उसको निकालोगे ना। ये सिक्योरिटी सारों को फिंगरप्रिंट करे, सारों को आई प्रिंट करें और सारों को ट्रैक करें एक सिम के थ्रू। सारी चीज़ें सॉल्वेबल हैं भाई। फिगर आउट हाउ यू आर गोइंग टू गेट डॉलर्स इन द कंट्री। जिस इलाके में कुंडा लग रहा है, जब आप एक इलाके में प्राइवेट ओनर को लेके आ गए वो खुद ही कुंडा हटा देगा। आज मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 इंडियन रुपए है, जो कि पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 370 के 390 रुपीज़। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको भी ऐसे लोग चाहिए जो कि ईजिली रिप्लेसेबल। Welcome to How Does It Work? This podcast is powered by Tecno. Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pakistani. हम कराची वाले स्टूडियो में हैं again. We've got a very special guest again. This has been a lot of fun in Karachi. We have got the founder and CEO of Bykea, Muneeb Maayr. Thank you so much for being on the podcast. Yeah, thanks for the opportunity. Yeah. No, it's great. Yeah, Bykea, Daraz, mashallah, you've had quite the career so far, and we're excited to see where it goes. And abhi hum off-air discuss kar rahe the, and that's kind of where I want to start. The personality or characteristics of success, right? And let me sort of paint a picture for you. I saw a podcast. There's this guy I follow. His name's Alex Hermosi. If I'm botching that name, I'm sorry. But anyways, he said that psychologists did an experiment and they found that successful people, not entrepreneurs, but successful people, had three characteristics. For the first one was they were able. They had self-confidence or a little bit of arrogance, right? The second part that he mentions is that they also had this sort of insecurity to go that kind of messed up with the self-confidence because they constantly felt like the need to prove themselves. Even it was a daily almost obsession. So the fear of failure and the belief that you will succeed crippling each other. And then the third thing that he mentioned, this is well documented with many experiments as well, is delayed gratification, right? So patience. Kitni long term, how long can you sort of feed the beast while also managing the anxiety, and how long can you keep this going, right? What do you think? What are the characteristics that make people successful? Yeah, again, ये opinion है. So yeah, it's just your opinion. सही गलत भी हो सकता है, right? So मेरे ख्याल में आपको जद्दोजहद जो है ना का शौक होना चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा खपती भी होना चाहिए, और whether you call it eccentric या खबत होनी चाहिए. I don't think you need to be very intelligent. I think you need to be very diligent, और लगे रहें. अभी अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो तो जैसे चाइनीज़ की बात करते हो यार, वो तो अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते, उन्होंने एक ऐसे कॉपी करके फर्स्ट कॉपी से भी बेहतर कॉपी निकाल ली, राइट? क्यों लगे रहते हैं. सो आई थिंक anyone, whether it's an artist, whether it's a musician, whether it is a tech entrepreneur, whether it is anything, आप किसी भी चीज़ पे कंसिस्टेंटली लगे रहो तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. अच्छा, let me ask you another question. अगर इसी चीज़ से लेके चलें कि यार वो डिलीजेंस चाहिए, बहुत मेहनत करनी है. Another thing that I saw and I want to discuss with you is कि a successful entrepreneur doesn't necessarily mean a happy person. Those are not मतलब कि ये जो lifestyle है is almost obsessive. अगर आप किसी भी prime time athlete देखें, किसी भी successful on necessarily ये नहीं है कि that's the life you want to have. It's almost a blessing and a curse at the same time. Do you feel like you can't switch off? I think that has been a problem for me. I think I'm getting a little better at it now. I think compartmentalizing your life is difficult when you are building things, but, I think it's okay, right? I mean, listen, you have one life. You don't have a lot of time, right? And either that life has a purpose or it has no purpose, right? And majority of the people will have no purpose. And by the way, purpose doesn't necessarily mean कि जी wealth आप generate करो, या जी आप
एथलीट हो तो जी आप फर्स्ट पोजीशन लो, राइट? You can just have not necessarily have those very high aspirations yet still have a purpose, right? And I think if you have that purpose, the competition is yourself, it's not someone else, right? And if that competition is someone else, you're constantly thinking, and that can also make you miserable at times. And what about like, so I was wondering this as well. So आपने भी बात की कि these are the characteristics, this is how it goes. Then I wonder like how much of, there was a general, I've forgotten which one, who burnt the boats. Just saying that you burn your boats, they landed and they realized that the army was much bigger than them. So उसने रात में he burns the boats so that they have no option but to go forward. अब अगर मैं आपको उसी एनालिजी से लेके चलूँ, entrepreneur जो मैंने देखा है successful in the tech space or in most spaces, they kind of had to be successful, right? मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, फैजान का big fan of his from Book Me, right? My partner Amir भाई, just have up you, right? So there's a profile, मैं अगर आपको profile बना के दूँ, and then अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ, not to discredit anyone, ऐसा नहीं है, there have been some fantastic people, all kinds, but जो वापस्तानीज एक बज़वर्ड बन गया था आपकी इंडस्ट्री में, कि जी वो स्टैनफोर्ड का है, वो उसका है, नॉट टू से दैट दे आर नॉट, मे बी दे आर मोर इंटेलिजेंट, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब मेरी बीवी बच्चे अमेरिका में रहते हैं, आई एम हियर, आई एम नॉट, आई हैव अ प्लान बी, आई कैन गो बैक एंड डू माई जॉब एट Uber or whatever, right? I'm not fully in it because I have options. Should entrepreneurs have plan B or should they burn their boats? Yeah, that's a tough question, right? So basically I think 2-3 टाइप की प्रोफाइल्स होती हैं. एक प्रोफाइल होती है कि जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती और वो ही ट्रेल ब्लेस कर रहे होते हैं. वही बेसिकली अपने ख़ानदान में, अपनी अपने नेट ग्रुप में, अपने दोस्तों में भी वही बेसिकली ट्रेल ब्लेस कर रहे होते हैं. So I think there are a lot of opportunities for that in Pakistan क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है. If you can get a Malala from random town in Swat who can represent better than a child who's grown up in a posh sector in DHA. Clearly there are many such gems that are hidden and there's that opportunity. But I mean, many people are forced into basically a hustle. Okay? And I think it's good to be forced into a hustle because one of the problems in being wealthy is that you protect your children and you make them dependent on rental incomes or some sort of handouts, और उनमें वो hustle नहीं रहती, right? I wouldn't say that about all Pakistanis. कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके माँ बाप बहुत अमीर थे, उनको मतलब वो कोई स्कॉलरशिप्स पे नहीं गए, वो फुल पैसे दे के गए, वहाँ भी अच्छी गाड़ियाँ शाड़ियाँ रखी हैं, लंदन में बेसिकली ऐशी करके अभी भी लंदन करता रहता है सारा बात, राइट? लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं कहता हूँ काफ़ी सारे खासकर जो अमेरिका गए हैं वो स्कॉलरशिप लेके गए हैं, ठीक है, मेहनत से गए, और वो इस पूरे सिस्टम की कंपटीशन के थ्रू गए, ठीक है, स्कॉलरशिप्स लेके गए, और अगर वो वापस आना चाहते हैं किसी मकसद के लिए तो आई थिंक दैट्स एडमायरेबल. लेकिन इट नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर कि वो मकसद है क्या. मेरे लिए मकसद जो पाकिस्तान वापस आने का था वो प्राइमरीली ये था कि मेरी वालदा पाकिस्तान में थी तो मैं उनके करीब होना चाह रहा था, राइट? लेकिन कुछ लोगों का मकसद एक नॉस्टैल्जिया होता है, ठीक है, और वो एक टांग यहाँ होती है, एक टांग वहाँ होती है, बच्चे भी वहाँ पल रहे होते हैं, या वो कहते हैं लेट्स कम ट्राई आउट पाकिस्तान फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. सो और या उनकी बेटियाँ बड़ी हो रही होती है तो कहते हैं जी हम स्कूलों में डाल देते हैं ताकि इनकी शादियाँ हो सकें. So the many reasons why people come back, right? And I think Pakistan is a very very tough country to do anything in, and especially अगर आप एक बड़ी कंफर्टेबल मिडिल क्लास एनवायरनमेंट से आ रहे बाहर से, जहाँ सब आसाइशें हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑल सॉर्ट्स. तो यहाँ तो पिंडी इस्लामाबाद तो फिर भी आपका जो है, या लाहौर तो जो है वो तो मिनी दुबईज बने हुए हैं कराची के टैक्स के पैसों पे. लेकिन अगर आप मान तो ऐसे लेकिन अगर आप कराची आएंगे तो आप आगे पीछे रोडों का हाल देखेंगे, और
बिल्डिंग्स का हाल देखेंगे और आप कहेंगे कि भाई ये मैं किधर आ गया. और जब आप वापस आए थे, did you know that you wanted to do something on your own? So I convinced the CEO, the chairman of the company that I worked with, to offshore work to me in Pakistan. So I bagged a contract before I moved back to Pakistan. So if you ask, KG, your question was, should you burn your bridges? Absolutely not. I think that's foolhardy, right? Having said that, you need to have a plan, and you need to be committed to it, right? You can't be oscillating on it, right? So I don't think you should not think of a plan B. I think the plan B should always be in your mind, because you can't be kamikaze, especially if you have children, right? or family to take care of. You can't be kamikaze. Having said that, you also need to be comfortable in saying कि यार मैं अगर Corolla बेच के मैं पुरानी Cultus पे आ जाऊंगा, so what? It's a car. It's just going to move me from A to B. Is your family also a critical factor in this? I mean, you have to have a wife who is okay moving from the Corolla to the Cultus. Yeah, I think you need to marry very carefully. I think you need to marry someone who's going to be with you on the good and the bad, right? मेरे मामू ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि भाई, I was interested in someone who came from a wealthy family, बड़े नाज से पली रही थी. When he said कि यार, this may look very attractive to you right now, but is she going to be able to be with you through your ups and downs or not, right? And that's the partner you need, because it's a companionship. This is not a trophy. And just a companionship ki apne baat ki, the other part that's very important is the people you work with, right? At the end of the day, aapki team is 90% of what you are, right? You can't do everything yourself. तो यहाँ पे अभी तक हमें मतलब डिबेट होती है कि कल्चर क्या है, व्हाट्स अ गुड वर्क कल्चर, राइट? इज़ अ गुड वर्क कल्चर कि आप जहाँ से काम करना चाहते हैं आप करें, बीन बैग्स पे बैठें, प्ले स्टेशन खेलें, थोड़ी सी बर्गर लड़कियाँ हों जो इंग्लिश में बात करें. व्हाट मेक्स इज़ कल्चर? एंड देन अब तो ये भी आ गया ना कि कल्चर लो या पैसा लो, हम आपको बीन बैग दे रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है 3 लाख रुपए कमाने की, या वट एवर इट इज़. What are your take on work culture? Yeah, so let's look at examples of what people perceive as great cultures. ठीक है? So great culture कहते हैं जी, Google का बड़ा अच्छा great culture है, लेकिन आप किसी से भी समझने की कोशिश करेंगे, Google typically hires overqualified people to do mundane jobs. ठीक है? और वो आधे से ज़्यादा टाइम जो है फारिग लोग बैठे होते हैं. ठीक है? तो उनका दफ्तर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा. काम तो उन लोगों जो 1-2 प्रोडक्ट्स में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का काम शुरू किया, बस उधर से ही सर्च बेसिकली. एडवर्टाइजिंग के अलावा तो उन्होंने कोई कमाल किया नहीं अभी तक. ठीक है? सो व्हाई डू दे हायर ओवरक्वालिफाइड पीपल देयर? अगर मैं अकाउंटेंट, हाँ, बट प्रॉफिट फर्स्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हायर सो मच मनी यार. इतने पैसे आ रहे हैं कि भाई इतना प्रॉफिट है. ओला की जगह मैं मर्सिडीज भी ले लूँ तो क्या हो गया? ऑन द अदर हैंड देयर places like Netflix, Amazon, which are not good cultures to work in. Why? Kyunki dhanda hai. Or you'll be like fired, particularly at Netflix. Like they'll pay you almost twice of what you would get otherwise. Like they'll fire you within a few months. Tesla का भी मैंने इस तरह का सुना culture है. So मैंने college से जो graduate किया, तो I worked in investment banking for a little bit, and that also has one of the worst quote unquote cultures, जहाँ they make you वर्क वेरी वेरी हार्ड और गाली गलौज पे भी आ जाते हैं, राइट? बट आज आप मुझसे पूछो कि मैंने सीखा कहाँ, तो मैंने सीखा भी वहाँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने काम करना सीखा. जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो भाई आपको काम सीखना है, ना कि आपको एक एग्जीक्यूटिव बन जाना है. ठीक है? तो मेरे ख्याल में कॉलेज से निकल के आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट्स नहीं ढूंढनी चाहिए. आपको ऐसी इन्वायरमेंट ढूंढनी चाहिए जहाँ आपको बहुत ज़्यादा काम कराएं, लेकिन वो काम मंडेन ना हो, वो काम टेक्निकल हो, ताकि आप कोई टेक्निकल चीज़ सीखें. ठीक है? And I think if you ask about the companies that I've been involved, right? So some people, people who work with me or with my team, they actually really like working, at the company. But there are a few that don't. They don't survive more than a quarter, maximum a year, right? Because they're coming from cultures जहाँ hands-on लोग नहीं होते, जहाँ सिर्फ सेट होते हैं, मैनेजर होते हैं, काम खुद
नहीं करते या अटेंशन टू डिटेल नहीं है, या एक बहुत बड़े इदारे में वो एक कॉग इन द व्हील होते हैं. सो आई लाइक एन एनवायरनमेंट वेयर मेरे से लेके जूनियर मोस्ट या मैनेजर या सीनियर डायरेक्टर बंदा हैंड्स ऑन हो, मतलब खुद काम कर रहा हो, सिर्फ बेसिकली डिक्टेटम्स ना दे रहा हो. एंड आई थिंक you mentioned work from home. I think work from home works for people who are very dedicated and who are very committed. But even they get very lonely after a while. So I think partial of work from home can work. We don't allow work from home unless it is explicitly necessary. I mean, that, for example, one of our leaders is based out of the city where we don't have a lot of employees, and he needs time to think and also communicate in private, and so he works from home, and we don't have a problem with that. But he's on page, right? Like, he starts the day on time. He's always available through the day, right? And it doesn't feel like he's working from home. It feels like he's actually working in the same vicinity, right? So I think it requires a certain level of dedication that I would say 80 to 90% of people don't have. And do you think, आपने अभी बात की, and it's interesting about how you're very hands-on. There's two schools of thought इसमें, कि एक तो ये कहते हैं कि यार पता है it's good कि आप delegate करो, don't be hands-on, let the team manage everything. और दूसरा ये होता है कि आप मैंने सुना है कि इलॉन मस्क रातें गुजारता है टेस्ला में, खुद अपने हाथ से पता नहीं चीज़ें वो स्क्रूज टाइट कर रहा होता है, पता नहीं, these crazy stories you hear out of Silicon Valley. Would, in that sense, when you delegate or when you're hands on, why do you think that that's a good trait to have, or why do you think it's important? I mean, the question is, do you want to be involved or do you want to be on the beach? Right? I mean, there's some people who want to be on the beach. Investors want you to not be very involved ताकि they have a redundant sort of person other than you. ताकि आपको कल को कोई बस हिट कर जाए तो कोई और भी संभालने को, ठीक है. जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको भी ऐसे लोग चाहिए जो कि ईजिली रिप्लेसेबल हो. लेकिन अगर आप कोई चीज़ इनोवेट कर रहे हो या शुरू कर रहे हो, कोई भी काम शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए हैंड्स ऑन तो आप देखिए, आपसे ज़्यादा हु वुड केयर मोर अबाउट द बिजनेस, एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, राइट? एंड आई थिंक people who can work independently don't mind working with eccentric leaders. People who cannot work independently get frustrated because they're just a cog in the wheel and they can't produce independent output, and that gets very frustrating in smaller teams. आपने भी बात की about investors, and you mentioned that the what kind of profile they're looking for, which makes sense to their sort of business. आपने बहुत ज़्यादा, obviously you've worked in this space for a while. आपने venture capital भी देखा है इधर, international भी देखा है. What do you make of the sort of venture capital ecosystem here? How mature is it? How good is it? And then, is this the sort of profiles of people we need in this space? अब देखिए जी, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान was at the tail end of any money in that America printed. America printed almost $6-7 trillion, almost a third of its currency. अभी कोई $30 trillion के लगभग है. और वो ज़्यादातर पैसा जो है वो चाइना जाना था, लेकिन वो चाइना नहीं जा सका क्योंकि कोविड की वजह से और उनकी एंटी चाइना मेंटालिटी की वजह से वो पैसा had to funnel somewhere. So a lot of that money basically went into geographies where it hadn't gone in the past, right? So a lot of the money, of course, went to India, Brazil as well, and some of that money trickled into Pakistan, right? But I think मुझे exact numbers याद नहीं, लेकिन I think India में कुछ $70 billion गया था और पाकिस्तान में कोई $300-400 million गया था उस दौरान. And it's digital money that was printed. And what was that money looking for? That money was looking for a return, ठीक है. And the return, अगर if you're a wild gambling better, right? So what returns would you, आप बिटकॉइन देख रहे थे, क्रिप्टोज देख रहे थे, ठीक है.
आप फ्रंटियर जियोग्राफी में स्टॉक्स देख रहे थे या बिल्कुल न्यू स्टार्टअप्स देख रहे थे, तो वेंचर इज के जी एक बेट है, ठीक है, एक बेट है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अगर चल गया तो बेसिकली मेरा छक्का होगा, और वो छक्का ऐसा होगा कि वो दूसरी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मुझे रिटर्न देगा। तो मेरे ख्याल में फॉरगेट पाकिस्तान, मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत से लोग जो कि ये वेंचर बेट्स कर रहे थे ना, ठीक है, वो इस कसिनो के बेसिकली सिर्फ प्ले में थे कि जी मैंने आगे किसी को फ्लिप करना है। फंडामेंटली बेसिकली इट wasn't clear whether the business made sense. So for example, I know before this chat we were speaking briefly about you had also invested in some companies. Tech की इन्वेस्टमेंट का मकसद ये है कि जी टेक्नोलॉजी विल मेक whatever you do today exponentially grow. So I'm not sure how that happens in B2B, in operation heavy businesses, right? So एक मंजन ही आप बेच रहे हो कि जी एक वेबसाइट आपने दे दी दुकानदार को, ठीक है, और वो दुकानदार जो है मैजिकली अब आपको वो उस वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू बेसिक ऑर्डर कर देगा, तो आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, ठीक है। तो आई थिंक बाहर के इन्वेस्टर और पाकिस्तान के इन्वेस्टर जो हैं वो प्राइमरीली बैंकिंग बैकग्राउंड से आ रहे थे, ठीक है, और बैंकर्स जो है वो गुड टाइम और बैड टाइम दोनों में पैसे बनाते हैं, क्योंकि देर टिपिकली इंटरेस्टेड इन ट्रेड, दे नॉट बिल्डर्स, ठीक है। तो सो यू मे बी स्टक इन अ सेक्टर व्हिच इज नॉट सेक्सी ड्यूरिंग दैट टाइम। सो फॉर एग्जांपल अगर आप फंडिंग टाइम की बात करें, उस टाइम पे सेक्सी क्या था जी? क्विक कॉमर्स सेक्सी था, बिल्कुल, ठीक है, बाय नाउ पे लेटर सेक्सी था, ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, हु डिसाइड्स क्या ये चीज़ सेक्सी है? अमेरिका में जो चल रहा है वो इधर कॉपी करने की कोशिश करती है, इंडिया में जो वो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार अच्छा, एक आपने जिस तरह कहा ना बाय नाउ पे लेटर हो गया, जो भी हो गया, उसी के 5 आ जाएंगे, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं आएगा। हु डिसाइड्स व्हाट्स सेक्सी? हु इज द सॉर्ट ऑफ पपेट मास्टर हु इज लाइक यार अब जो है ना कोई कॉमर्स से भागो? बस भेड़ चाल है यार, जो एक ऊपर से बेसिकली ट्रेंड चलेगा, फैशन की तरह ही है। जो उस वक्त बेसिकली ट्रेंड चला, सारे उसी की लाइन में चलना शुरू हो गए। फिर द रीजन व्हाई एवरीवन इज गनिंग टू बी अ कॉपी कैट ऑफ दैट इज कि जी मुझे भी पैसे जल्दी मिल जाए। But again, I mean, let's take a step back. Investors everywhere in the world are looking for a return. Okay? If that return is in gambling or is in basically betting, they can be making bets on crypto, they can be making bets on real estate, they can be making, bets on anything, and frankly, many times those bets pan out, right? I mean, a lot of people became very, very rich on cryptocurrencies, A lot of people became very rich in Pakistan on real estate and continue to be very, very rich on crypto as well, actually. Yeah. We have a lot of crypto millionaires in Pakistan. Yeah, and so these, sometimes basically the builders get very frustrated कि यार हम तो किसी कारी की कंपनी बना रहे हैं लेकिन हमें पैसे नहीं मिल रहे, निस्बत उसको पैसे मिल रहे हैं जो कि फ्लिप कर रहा है, क्योंकि you're not aligned because the builders actually try to build something long term that the builder thinks is needed for society, ठीक है, while the trader and within the venture space and within the startup phase, I would say 60-70% of people are also trading. A lot of the startups जो बच्चों ने शुरू भी किए वो तो ट्रेड मेंटालिटी में थे कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है कि भाई बाय नाउ पे लेटर कोई सेंस बनाता है कि नहीं बनाता. It's not my passion. It's not my passion, but it's just what's hot. Yeah, and then from what I understand, a lot of venture capital also. Yeah. But Cham, that's no different to like you saying कि जी मैंने पेट्रोल पंप लगाना है मरी रोड पे. It's what's hot. Yeah. Right? And I can come in and say कि भाई मैंने एक सोलर पैनल लगाना है, सोलर पैनल से लगा के बेसिकली मैंने पूरी मरी रोड पे सोलर पैनल लगाया था कि जगह जगह पे लोग चार्ज कर सकें. And you be like, nah, I don't know, चलेगा नहीं चलेगा. Because it's not sexy right now. भेड़ चाल उस पर नहीं चल रही है, तो भेड़ चाल नहीं चल रही तो भाई आपकी लिक्विडिटी एट रिस्क है. अच्छा, अब आप मुझे बताएं, let's look at there's a whole like tranche of companies, Bykea as well, right? जिनने पैसे रेज किए एक डिफरेंट दुनिया में. उस दुनिया में पैसा खुला था, वैल्यूएशंस क्रेजी थी और पाकिस्तान के रिलेटिव क्रेजी थी. अब उन्हें वो पैसा रेज कर लिया.
अब जो प्रॉफिटेबल हो सकता है वो तो एक अलग स्टोरी है, जो नहीं हो सकता वो will they raise down rounds? क्योंकि एक इन्वेस्टर है, आपने लेट्स से $1 million डाल दिया एक बिजनेस में, अब वो बिजनेस में आपने डाला क्या ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सेट्रा, अब पाकिस्तान में एक तो रुपया भी डिवैल्यूज आवरली, so whatever you might even show as growth, inflation is killing you in that sense. फिर आपकी बहुत सारी costs ऊपर जा रही हैं depending on what business you're in. What happens to all of these businesses that raised millions of dollars that are still in the market? Do they raise again? Will they raise again? Will anyone invest in them? ये अब वो जो एक तो वो था ना बेचारा जो अभी आया कि यार मेरे पास बिजनेस प्लान है, उसको तो चलो कोई पैसे दे नहीं रहा, एक आ गया जो प्रॉफिटेबल है और वो तो चलो ठीक है निकल गया आगे, जो ये बीच वाली कंपनी इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये मर जाएंगी सारी, और मरेंगी इसलिए क्योंकि देखें रेज आप करते हो जब आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे होते हो कंपनी की, ठीक है, तो वैल्यूएशन तो मेरा नहीं ख्याल है अगले 2 साल में इंक्रीज हो रही है, ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस पे इन्होंने पैसे रेज किए हैं, ठीक है, तो अगर तो इम्कानात नहीं हैं आपके या प्रॉफिटेबल होने के या बहुत कम पैसे बर्न करने के, तो आपने आज नहीं तो कल बंद हो जाना है, ठीक है। कुछ कंपनियों ने इतने ज़्यादा पैसे रेज किए हुए हैं कि it'll be a long time, years maybe before the music stops, right? If you were an entrepreneur in their position, आपने अब चले आप आ गए ना इधर, उनकी गलती नहीं है जो मैं आ गया हूँ इधर, what do I do? Do I just sit there and twiddle my thumbs till the music stops? So आप you start thinking कि भाई how can I leverage what I have learned or built to essentially diversify my revenue. That can be diversification of revenue within the country, or that can be diversification of revenue outside the country. So I'll tell you where we are. So we are very close to break even. But we're also in a sector जहाँ कोई अमेरिकन नहीं आता तो रूसी आ जाता है, अब नए रूसी आए हुए हैं, और दुनिया में पैसे तो जला नहीं सकते, तो वो पाकिस्तान में जलाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो so it's just like some idiot comes in and starts burning money again and again and again. And you fight them. Yeah, and you have to fight them, right? So basically, I think we have gone a step back and we're thinking, okay, let's forget about a Me Too product. Let's forget about basically इन्होंने क्या बनाया. Let's go back and think about कि मार्केट की क्या नीड है और क्या चीज़ है जो किसी ने नहीं बनाया. सो हम अभी जो रिलीज कर रहे हैं वो एक मंथली कारपूल प्रोडक्ट है जो कि किसी राइड हेलिंग ऐप के पास नहीं है. मंथली कारपूल ऐप इज हाउ डज इट वर्क? फॉर एक्सप्लेन करते हैं. सो आप अगर आप ऑफिस ड्राइव करते हैं रोज, आप ऊबर करीम के ड्राइवर नहीं है, आप ऑफिस अपनी गाड़ी रोज लेके जाते हैं, बिलफर्ज आपका महीने में 30-40 हज़ार रुपये का पेट्रोल खर्च होता है. अब आप कह रहे हो कि यार 30-40 हज़ार रुपये का पेट्रोल जो अगर मैं अपना रिकूप करना है तो मैं काम करता हूँ 1-2 लोगों को या मैक्सिमम 3 लोगों को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन मैं जो है उनको सिर्फ अपने नज़दीक तरीन नेबरहुड से पिक करूँगा, मतलब रूट जो आपका है. हाँ बिल्कुल, जो मेरा रूट है मैं उस पर लेके जाऊँगा. तो आई लेट पीपल नो कि जी आई एम अवेलेबल. उसी तरह कस्टमर्स बेसिकली अपने साइड से कहते हैं कि जी हमें भी ये नीड है, और जहाँ भी हम निगोशिएट करते हैं एक फेयर पे वो लॉक हो जाता है महीने के लिए, राइट. अब वाई डू वी थिंक दिस कैन मेक सेंस? क्योंकि किराया देखिए पेट्रोल तो सस्ता नहीं हो रहा, ठीक है, और गाड़ियाँ भी सस्ती नहीं हो रही, तो द ओनली थिंग यू कैन डू इज एग्रीगेशन, ठीक है. लेकिन एग्रीगेशन की टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, और वन ऑफ द रीजंस वाई काफ़ी सारे लोगों ने नहीं बनाया इसकी इसको ऑफलाइन दुनिया में तो चल रहा है, आज नहीं बड़े ऐसे से चल रहा है, बचपन से हम कारपूल करते आ रहे हैं, लेकिन इसको टेक्नोलॉजिकली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो we've been working on that, and frankly speaking, if it works in Pakistan, there's no reason why we can't do it in another geography outside of Pakistan. And that basically means that you can build technology in Pakistan cheaper than you can build, for example, in the United States, in Israel, any of those countries. And if you can do what Israeli companies have done, forget Indian companies. A lot of people talk about Indian companies. Indian तो ठीक ठेकेदार है, ठीक है,
आप टाटा कंसल्टिंग ले लें, HCL ले लें, इन्फोसिस ले लें, ठेकेदार है। इन्होंने कहा जी आप अमेरिका में $1,00,000 का बंदा मिलता है, हम आपको बेसिकली $40,000 में बंदा देंगे। कोई इनोवेशन सच नहीं हो रही है। Like they're a factory for people. बट चाइना भी शुरू में इस तरह नहीं था, मतलब Sure. there might be the evolution to innovation. Sure. Right? पहले तो पैसा है ना. Sure, absolutely. But if you talk about trying to replicate someone, I would replicate the Israelis. ठीक है, क्यों? Because the Israelis make technology in Israel and sell to the world. Fiverr जो है आपका, Fiverr तो basically is all based in Israel. अच्छा, हाँ, Fiverr की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, right? So you know, you need to be like in Israel. आपने अपने मुल्क में जो टैलेंट है निस्बतन सस्ता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके आपने एक्सपोर्ट करनी है ताकि रुपए हैं। और बाय द वे बाइकिया दराज से पहले दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। एक कंपनी थी SNL जो कि अब स्टैंडर्ड फोर्स ने खरीद ली, S&P इंटेलिजेंस के नाम से। इन सिस्टम्स के बाद स्टिल द सेकंड लार्जेस्ट IT एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान। तो आई बिल्ट इट अप टू अबाउट 600 पीपल। अभी आई थिंक कोई 2,000 बंदे हैं। तो क्या काम करता है? ठेकेदारी का काम था कि जी वहाँ अमेरिका में लोग हायर करने की बजाय आप पाकिस्तान में हायर जो ठेकेदारी का काम हमने जब किया था, हाउ मच इजी और हाउ मच हार्डर इज इट टू डू? It's a lot easier to do. It's a lot easier to do than building a product. It's a lot easier to do than selling anything in Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान में तो देखें ना, आपकी सपोजिशन ये थी कि मिडिल क्लास ग्रो करेगी। वो मिडिल क्लास एक्चुअली if you look at the GDP per capita, your GDP per capita was probably $1,100-$1,200. Frankly speaking, after this devaluation, I don't even know what the numbers are going to be. Like, bro, what are you going to be, $600-$700? Like, I don't know where you're going to land. So then let me ask you another question, right? आपकी जो primary business है, and I want to understand why you started it as well. लेकिन पहले ये है कि मिडिल क्लास के पास पैसा कम होता जा रहा है, इंडी वैल्यू होता जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू लुक एट इट डॉलर वाइज। पेट्रोल की प्राइसेस आपको तो अफेक्ट, मतलब हमें करती हैं तो आपको तो करती ही है ना, एंड आपकी जो राइडर्स एंड एवरीबडी एल्स इन योर टीम। सो द एनर्जी क्राइसिस, द devaluing currency, the dispersion of the middle class. Right now where Bykea is, how are you, are you looking at EV play? What are you going to do to combat all this? Yeah. I'm negative on EV, by the way. You know, but I'll get to that in a bit. ठीक है. देखिए, you have to recognize that this country has been living under a subsidy. The people of this country have been living under a subsidy for decades now. आज मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 इंडियन रुपए है, जो कि पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 370 के 390 रुपीस। ठीक है, तो और आपका उन्हें जी इंडिया से, मैंने ट्विटर पे लिखा लोगों ने, आप इंडिया के साथ कैसे कंपेयर? ओ भाई, पेट्रोल तो बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, पेट्रोल इज अ कमोडिटी, इट्स अ ग्लोबल कमोडिटी। यू नीड टू फिगर आउट कि भाई आपका पेट्रोल इंडिया से सस्ता क्यों बिक रहा है, या आपका पेट्रोल अमेरिका से सस्ता क्यों बिक रहा है, जो मुल्क खुद पेट्रोल बनाती है। ठीक है, अच्छा सवाल है। So first of all, you know, your people have been living under a subsidy. दाल, आप $1 बिलियन की दाल इंपोर्ट करते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। क्यों? क्योंकि दाल आपने इतनी सस्ती रखी है मुल्क में कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट है उसको वारे में नहीं पड़ता दाल उगाना। और लोग अभी कह रहे हैं कि जी नहीं, ये जो है एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएंगे तो टैक्स सिस्टम पाकिस्तान का ठीक हो जाएगा। गलत बात कर रहे हैं भाई, एग्रीकल्चर तो पैसे नहीं बना रहा। आप किसी भी फार्मर से समझें कि भाई आप फार्मिंग क्यों नहीं कर रहे, हर बंदे ने ठेके पे क्यों दिया हुआ है, जितने जमींदार लोग भी हैं उन्होंने ठेके पे क्यों दिए? भाई वारे में नहीं है, उससे बेहतर है कि ज़मीन बेचो और कोई और काम करो, कि वारे में नहीं पड़ता, बीच में पैसे मिडिलमैन बना रहा है। ठीक है, सो आई थिंक a lot of the we've got too many cooks. Everyone has an opinion about things, but they don't really understand things. You know, we keep talking about कि जी बिजली, well बिजली में you have like 40-50% line losses यार। Fix those lines, privatize all these discos, जितनी इलेक्ट्रिक कंपनी, प्राइवेटाइज देम। जिस इलाके में कुंडा लग रहा है, जब आप एक इलाके में प्राइवेट ओनर को लेके आ गए, वो खुद ही कुंडा हटा देगा। ठीक है, और दैट्स व्हाट दे डिड इन इंडिया। सो यू नीड टू प्राइवेटाइज ऑल ऑफ दिस, and you know, you will have a hard few years for sure, but let's recognize that without these hardship years, you will not be able to get females in your household become part of the income earning demographic. पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि औरतें तो काम ही नहीं करती। आप बाजार में चल जाए, औरतें आपको नजर ही नहीं आती। ठीक है, अब लोग कहते हैं जी बांग्लादेश ने बड़ा कमाल कर दिया। क्या कमाल किया? वो गरीब हुए पहले, जब इतने गरीब हुए हैं कि भाई, you know, the female had to come out and essentially work,
That was their salvation. आपका people per household basically urban पाकिस्तान में वो 6.7 है, यानी एक मर्द कमाने वाला है, 6 खाने वाले हैं. इंडिया में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में 4 है. तो you need to get poorer. This is bad news obviously for the mass demographic, but you need to get poorer to get for, richer. for structural things to change in this country. Yeah. Public transport could also be an option finally like explored. I don't know what your thoughts on that are. Yeah, so obviously everything I say is going to be with a pinch of salt, right? But like a lot of the things that you're looking at public infrastructure was public infrastructure that was planned in the West in the 20s and 30s. Okay? And उस वक्त technology नहीं थी. And so you couldn't crowdsource through the internet, right? And now you can. And what public transport doesn't solve for the last mile. And in countries like Pakistan, where women cannot walk more than 100 meters or 200 meters or 300 meters, you've got to solve for last mile, right? Forget that men don't walk. How often do you walk like a kilometer? Karachi में तो पिंडी इस्लामाबाद में you don't walk a kilometer. इस्लामाबाद में फिर भी इस्लामाबाद की जो फैंसी सेक्टर्स हैं उसमें बंदा चल लेता है वो काफी है, राइट? लेकिन you're right 100%, मतलब बहुत unlikely है. आप अगर मैं जो steps होते हैं when I'm outside of Pakistan it's like 10-20,000 a day. When I'm here अपने ऑफिस में इधर चल रहे हैं, everything is in the car. Why don't you like EV? आपने बात की थी and it's kind of yeah, so there are a couple of things, right? So if you look at, मैं आपको power industry बताता हूँ पाकिस्तान में कि I think मेरे ख्याल में last month जो total आपकी जो consumption हुई है गर्मियों के महीने में इसी चल रहे थे, I think कोई 12 गीगावाट से ऐसे इसके लगभग बेसिकली हुई है. और आपने जो पैसे दिए गवर्नमेंट ने वो 30-40 हज़ार गीगावाट के आपने पैसे दिए. So essentially you're producing more electricity and having to pay for it as a government because you've signed up with these IPPs. Now, what are you using to produce that electricity? You're using basic furnace oil, all imported. Okay? So the problem that I see with EVs is that EVs are in Pakistan dependent on furnace oil to create electricity. या तो होता ना आप सोलर पे बंद कर रहे होते. अब आपको मैंने दिन के टाइम नहीं रात के टाइम बेसिकली बिजली क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? बैटरीज जो है वो इतनी एक्सपेंसिव है और सारी की सारी बैटरीज लिथियम आयन है और उसकी टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व नहीं है, तो यू डोंट हैव रेंज. सो आप अमेरिका में भी चले जाओ, ईवी कौन चला रहा है? टेस्ला कौन चला रहा है? अमीर बंदा. गरीब बंदा तो ईवी नहीं चला रहा. क्यों? क्योंकि वहाँ भी ईवी इतनी महंगी है कि वारे में नहीं पड़ते. सो the technology has to get there first, is what you're saying. Technology has to get there first. So I think Pakistan needs to figure out producing its own electricity for sure. I think in terms of vehicles, in the day, if we can figure out a solar infrastructure, that's possible. But I think forget all of this, यार. आज से 60-70 साल पहले वैसे ट्रैमें चल रही है बिजली पे, वो भी तो बिजली पे चल रही हैं. मेट्रोस चल रही हैं, वो भी बिजली पे चल रही हैं. Why are we trying to essentially import new things, spend more money in importing, from China? We can take literally our old trains, we can literally take our old buses, पुरानी हिनों की buses वगैरह भी लेके एक तार ही आपने खींचनी है ना, उस तार पे बिजली चलानी है. आप शहर के कोने में जाके एक सोलर फार्म लगा दो. इनफैक्ट आप हर बंदे को इस मुल्क में अलाउ करो कि वो सोलर बिजली किसी को भी बेच सके. मैं वेगस से LA जब जा रहा था तो रास्ते में जगह जगह पे लोगों ने प्राइवेट फार्म्स लगाए हुए थे. तो it's a great idea actually. Let people contribute to essentially infrastructure. Yeah, privatize it all. The state doesn't need to do any of this. I said, let me ask you another question, right? So Monis Rahman from Rosie and Dukan, etc. तो हमारी podcast में जो बात है, तो he said that, and I like this, I found it funny, you get pregnant with an idea. ठीक है? You strike me as आपने पहला business भी very structured, एक logic से follow किया, right? Yeah. Is your ethos that you find the problem to solve? Is it just that I'm passionate about X? Is it that the right opportunity comes along at the right time? How do you make a decision कि यार मैंने दराज करना है? How do you make a decision कि मैंने Bykea करना है? Yeah. Look, I've been wrong about a lot of things as well. But I'll tell you basically, I'll tell you that when I moved to Pakistan for the Decoding business, which is the business that Tata Consulting is also in, Systems is also in. Systems is, by the way,
is one of the most successful It is the most successful IT company. IT company in Pakistan, but it's a ठेकेदारी का काम, right? So Nothing wrong with that. nothing wrong with that, but that's what I did, and the premise was that you are getting fiber optic internet that is going to connect continents together, and with that you can do wage arbitrage for English speaking people in countries like Pakistan. Okay. And so the premise was that you can hire English speaking people cheaper in Pakistan. So that's the first thing I did. The second thing around Daraz was, first of all, it was not my idea. I was actually working on a clone of eBay called C-Mailer. And the idea was... What's that clone? Yeah, we never went public with it. It was called C-Mailer. Okay. cmailer.com. Anyway, so the idea was that we were going to allow anyone to sell anything in the country, because you already had TCS and Leopards and so forth, so the logistics infrastructure existed. And so it didn't make sense why a seller in Karachi couldn't sell to a buyer in building, right? So that was the idea, and you could make the entire country like one market, right? So that was the idea. With Bykea, the idea was that I don't think the internet is going to reach the bottom of the pyramid, or at least the middle class, beyond entertainment. Whether it's TikTok, YouTube, all of this is for the most part entertainment, right? Facebook and all. It's all entertainment. It's not for utility. So how can you, like, what is one thing you can do for people who are not super literate, to essentially get them in the realm of the internet, to essentially match with each other, right? And so that's where ride-hailing came in. Motorbikes came in because Pakistan had about 17 million motorbikes, 4 times as many as cars. And so that was a thoughtful kind of strategy. It was a contrarian strategy because Pakistan didn't have a bike taxi culture, right? It was contrarian because most products built in the country are actually built for the upper class, right? Because people presume that is the only class with any income. Yeah, worth targeting. And listen, I'll be candid. I can bite my tongue on this, that we keep saying 220 million people. That 220 million people is not addressable. ठीक है, वो में हमें छालिया के लिए एड्रेसेबल होगा, ये हेड एंड शोल्डर के बेसिकली साशे शैम्पू के लिए शायद एड्रेसेबल हो जाए, ये नेस्ले को कुछ खाने पीने के लिए बेचना है तो एड्रेसेबल हो जाए, लेकिन उसके अलावा क्या नेस्ले आई फील लाइक वुड स्ट्रगल लाइक प्रॉपर 220 मिलियन. और मैं आपको एक अजीब सी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन तीन शहरों में कोई 35 मिलियन बंदा है, ठीक है. आपने एक और 35 मिलियन ऐड करना है ना, आपको 100 शहर ऐड करने पड़ेंगे to get to 70 million people, which basically means this is a completely rural country. It is not urbanized at all, So हम लोग at least बड़े शहरों में रह के समझते हैं, we are representing Pakistan. No, you're no more than 15% of the country. Yeah, and that too is a stretch, right? And that too is a stretch. And the people that live within your city. Yeah, that's what there's such a polarization. Or within Islamabad, within polarization, देखो polarization कितनी ना, मतलब कितना हद तक कितने differences हैं. Yeah. तो मेरे ख्याल में ये आबादी at some point liability बन सकती है, ठीक है. खासकर अगर इस आबादी के पास काम लो, तो काम आपने ऐसे सोचने के, देखिए जब तक तो अमेरिका पैसा प्रिंट कर रहा था, ठीक है, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तब तक तो बेसिक कोई फॉरेन पैसा आ रहा था. लेकिन अब क्योंकि वो नहीं हो रहा, तो यू हैव टू गो बैक टू थिंकिंग लाइक द वियतनामीज डू, द इजरायलीज डू एंड ऑल, कि आपने ये थाईलैंड को देख लें ना, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास और कुछ नहीं बेचने को, हम जो है एंटरटेनमेंट बेच लेंगे, एटलीस्ट लोग आगे डॉलर तो दे देंगे हमें, राइट. आप ये देखें कि आज तक पाकिस्तान में why do you need a visa? Why does anybody need a visa? And it's as hard. But I had some friends who attended my wedding by side of the US, foreigners. Yeah, it's as hard for us to go there as it is for them to come here. But it's a nightmare, and nobody wants to come in the first place. यार आप उनको फिर, लेकिन मैं कह रहा हूँ दुनिया जो है ना अब ढूंढ रही है कि वो तंग आ गए, यूरोपियन खासकर तंग आ गए, ये लंदन, पेरिस, रोम, कुछ नया चाहिए. मैं अभी बॉस्निया गया, छक बेसिक टूरिस्ट भरा हुआ था. क्यों? क्योंकि वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है. पाकिस्तानियों के लिए अगर आपका अमेरिकन वीज़ा या बेसिक यूरोपियन वीज़ा, तो आपको वीज़ा वहाँ रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन यूरोपियन टूरिस्ट वहाँ भरा हुआ था, अमेरिकन टूरिस्ट भी भरा हुआ था. सो आज आप बेसिक पाकिस्तान में वीज़ा हटा दें, मैं कहता हूँ इंडियंस के लिए भी हटा दें भाई, इतना आपको पैसा इंडिया से आएगा ना
क्या आप भूल जाएंगे नहीं, किसी 100%. दुश्मनी? कल्चरल टूरिज्म और आप कहते हैं जी सिक्योरिटी सारों को फिंगरप्रिंट करें, सारों को आई प्रिंट करें और सारों को ट्रैक करें एक सिम के थ्रू, सारी चीजें सॉल्वेबल हैं भाई. फिगर आउट हाउ यू आर गोइंग टू गेट डॉलर्स इन द कंट्री, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स, नॉट कर्जे के थ्रू. देखिए जब मुगल आए थे ना, तो मुगल आके बेसिक एक इलाके के हेड उसको बनाते थे जो उस इलाके से ज्यादा पैसे निकालता था. अभी जो आपका MNA MPA बनता है वो कहता है जी मुझे ऊपर से पैसे कोई दे. वो ऊपर से पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कर्ज के थ्रू. सो even politics is lopsided. बिल्कुल. You know, and you need to essentially, every administrative leader in any geography needs to essentially prompt his people to do something that they're going to be able to sell, ideally sell overseas to get dollars in so that they can extract more money. And मतलब, if we were to look at the government, right? I mean, you just touched on it, and I think that's an interesting point. Frameworks need to change, right? Current downfall का शायद एक ही सिल्वर लाइनिंग ये है कि देखो पॉलिटिशियन भी बेचारा क्या करे, राइट? सब्सिडी लगाएगा पेट्रोल पे, वरना पेट्रोल आप प्राइस रेज करते हैं, ट्विटर पागल हो जाता है, आप सपोर्ट लूज करते हैं. दाल की प्राइस ज़्यादा करेंगे, चाय की प्राइस, मतलब हम अब वही वाली बात है ना, बात आ जाता है कि एक सस्ता मील दाल रोटी है ना, मतलब अब ये बंदा, यार आपको डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए, ठीक है? आपके लोग जो है, हर बंदे का ओपिनियन है इस मुल्क में, ठीक है? You know, and the problem is there are people on TV and on Twitter and all these things who know nothing about that sector. You know, अब जैसे बेसिकली मैं कल ट्विटर पे देख रहा था, कोई कह रहा था कि यार हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम ईरान से तेल क्यों नहीं मंगाते, ईरान से में सस्ता पड़ेगा. ओ भाई आपको कर्ज सऊदी अरेबिया ने दिया, सऊदी अरेबिया आपको ईरान से तेल लेने देगा? क्या बातें कर रहे हो आप? यू नो, लोग कहते हैं कि जी इमरान खान के साथ बड़ा बुरा किया. भाई जिससे आप भीख मांगने जा रहे हो उनको आप कह रहे हैं मैं क्या आपका गुलाम हूँ? सोचो आपके बेसिक घर में आपका मुलाजिम उठ के वो तुम समझते क्या अपने आप को? आप क्या करोगे? उसको निकालोगे ना, ठीक है? सो लेट्स बी क्लियर यार, यू नो, वी नीड टू स्टॉप टॉकिंग, वी नीड टू स्टॉप स्पेंडिंग बियॉन्ड आवर मीन्स, ठीक है? एंड वी नीड टू गो थ्रू अ रफ 3-4 years of being able to build things that we can export, ताकि आपकी ये किराने की दुकानों में इंपोर्टेड चीज़ें ना हो, पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ें हो. नहीं, that's actually quite interesting in a lot of things that never. कोक का मैं देख रहा था पीछे, कोक बेसिकली मेरे ख्याल में कोई $3-4 billion का कोक पाकिस्तानी हर साल पीते हैं. It's more readily available than water. It's ridiculous, right? अरब जो है वो अपने लबन पीते हैं, जो लस्सी है. हम लस्सी क्यों नहीं पीते? We're one of the largest basic milk producers in the world. Right? So the government needs to come and put a danda, you know. बस होगी यार. And you know, it may not come through a democratically elected basically constitution. But you're all for that. I'm all for. As in, लेकिन डंडा चाहिए. My personal opinion is, and you can give yours. कि however it happens, I don't care anymore. Right? कि अगर देखिए, if the danda is not from a democratically elected, I don't care. I just want stability, right? I want us to stop drinking Coca-Cola and, or for example, chocolate है. आपने ये सिगरेट है, हम क्या जाके कहते हैं, इम्पोर्टेड वाली देते हो. आपको पता है इम्पोर्टेड सिगरेट अभी जो है वो पाकिस्तानी सिगरेट से सस्ती है. हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं पीता हूँ ना. डैनियल स्विच, मैं ये बात किसी को उस दिन समझा था कि ब्लोज माय माइंड कि मैं इम्पोर्टेड सिगरेट पी रहा हूँ सस्ती, ठीक है, और आपकी जो मतलब लोकल बन रही है, जो भी BAT फिलिप मॉरिस वगैरह बना रहे हैं, महंगी है. ये एक्सप्लेन दिस टू मी यार. क्योंकि बेसिकली देखो, हियर्स व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है? आपके जो बॉर्डर्स है ना, आपने खुद नहीं रोके हुए. आज आप बेसिकली अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करना शुरू करो तो आपकी ये स्मगलिंग खत्म हो जाएगी. हो ये रहा है इस मुल्क में, जब लोगों को ये समझ आए कि जी रियल एस्टेट में अब सट्टा नहीं लग सकता, तो उन्होंने बेसिकली पैसे कन्वर्ट करने शुरू कर दिए और वो पैसे भेजने शुरू कर दिए हुंडी के जरिए सारे दुबई. सो पाकिस्तानी कंपनी आर द नंबर 2 कंपनी दिस ईयर आफ्टर इंडिया ऑफ सेटिंग अप कंपनी इन द UAE. ठीक है? सो सारा का सारा पैसा लोगों की सेविंग्स जा रही हैं दुबई. अब आप इसको कैसे रोक सकते हो? इसलिए रोक सकते हो कि भाई आपका यार ये कैश जो है ना, मैं नहीं पूछूंगा आपके पास ये कैश कहाँ से आया है, ये कैश खुदा के वास्ते बेसिकली बैंक पे जमा कर दो. मैं FBR को भी कहूँगा नहीं पूछेंगे, ताकि जो हुकूमत ने जो आज 22% दे रहे हैं बैंकों को, और जो banks are making a record profit because Pakistan's debt is actually not international. 60% of Pakistan's debt is domestic. Yes. PSX पे the best performing stocks are all bank. वजह ये है ना कि they have the best customers. Yeah. एक तो अपनी हुकूमत भी एक customer है. The hukumat is the one that's a customer. Every time you increase the interest rate,
it's the banks that are making the killing. Yeah. Right. So what you need to do is you need to allow the people of this country to essentially take their cash and make money off it. They can't today. आज white, black, इस सारे चक्कर में, इस डर में कि जी पैसे रिपोर्ट हो जाएंगे, टैक्स में पकड़े जाएंगे, all your cash, जिसके पास वसाइल हैं, वो कैश हुंडी कर रहा है और ये हुंडी रुक नहीं रही. मैं आपको बताता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल अब एजेंसी चलाते हैं, फेसबुक को पेमेंट करनी है, इसको पेमेंट करनी है, आप उसको टैक्स कर रहे हैं, आप उसको you're forcing our hand कि जो करना भी नहीं चाह रहा ना हुंडी, एंड में क्या करेगा? We have a company registered in Delaware, we have a company registered in Dubai. You're not going to bring money to Pakistan. We're just not going to bring it into Pakistan. आप अगर मेरी जिंदगी हिसाब कर दोगे तो मैं क्या करूँगा? Is it my fault or is it their fault? वाली बात है ना. I mean, at the end of the day, you're making it impossible to do business, and then you blame us for moving our money elsewhere, etc. It's stupid. Khair, आपने बड़ा time दिया. Firstly, I wanted to thank you for that. I just have one last question, and it's not really related to Bykea or all of those things. You grew up in Pindi. आमिर भाई मुझे हमेशा कहानी सुनाते हैं कि आप बाइक पे Relevance चौक. कि आप अपनी बाइक पे खुद भी फिरते थे, and you were the biker boy before Bykea, which I found really cool. Now you live in Karachi. How different are the people? How different is the working culture? I find myself, मैं कल तला से भी बात कर रहे थे, from Islamabad. मैं कराची आता हूँ ना, मुझे लगता है कि ये लीग है, और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ना, वो ये. I actually feel like the difference in people, the difference in mentality, the talent. How do you view Karachi versus Islamabad? यार जब मैं पिंडी इस्लामाबाद में था तो बेसिकली मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते थे रेस्टोरेंट खोलो. उनकी सोच जो है ना पिंडी इस्लामाबाद तक है. जब आप लाहौर जाते हो, बेसिकली लाहौर वाला सोचता है कि जी मैं जो है ना पंजाब को बेचूंगा. ठीक है, मेरी बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो सियालकोट और गुजरांवाला, इस्लामाबाद. जब आप कराची आते हो तो आप कहते हो मैं पाकिस्तान को बेचूंगा. ठीक है, और अगर आप अपने हमसायों को देख लो तो उनकी अब सोच जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे, वो कहते हैं कि हम दुनिया को बेचेंगे. ठीक है, सो आई थिंक द inward thinking needs to change a little bit, and there needs to be more travel between cities in the country as well. I think कराची के साथ बहुत ज़्यादती हुई जा रही है आज से नहीं, बहुत अरसे से. I don't think कि जितना टैक्स इस शहर के लोग देते हैं उसके वजह उनको बेसिक बेनिफिट मिला है, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिली है. ठीक है, सो इट इज़ कम्प्लीटली अनफेयर. And if that is not fixed, I think it's a problem for Pakistan long term. I'm from Pindi, right? But I'll tell you, on the one side, I feel good about going to Lahore and Pindi, Islamabad. On the other side, I say, but where is this money from? This money is either being... Yeah, the roads are better, the things are cleaner. या तो कर्ज है, और कर्ज को पैसे वापस कौन दे रहा है? टैक्स के जरिए. Karachi, one or two basically small, sections of Karachi pay more tax than basically all of Pindi, Islam and Lahore combined. How ridiculous is that? That is ridiculous. Fair. Hopefully that's something that will change. And so I love the people here. Diverse है. Open-minded भी ज़्यादा है. और यार वो ये नहीं देखेंगे आपने घड़ी कौन सी पहनी है, फोन कौन सा है, गाड़ी कौन सी है आपकी. यार हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो नीचे सीढ़ियाँ आपने भी अभी देखी on the way up. No one cares, right? We've had some pretty high-profile guests and they're relaxed about it. उनको कोई फर्क नहीं, because it's about getting shit done. मैं पिंडी इस्लामाबाद जाता हूँ तो basically I feel an inferiority complex यार. वो वहाँ के लोग इतने पिंडी इस्लामाबाद लाहौर में भी लोग मुहब्बती तो है लेकिन शोधे भी हैं यार. And I feel कि यार मेरी गाड़ी अच्छी नहीं तो मुझे जज कर रहे हो. VVIP कल्चर बन गया ना, मतलब गाड़ी ये देखते हैं, फोन देखते हैं, आपका गाड़ी देखते हैं, इस तरह you're stupid like. And then they want that protocol, they want to feel very important. मतलब they don't वड्डे लोग वड्डी गला. और वो नहीं देखेंगे कि मतलब काम क्या करना है. You know what I mean? तो खैर चलो यार, hopefully these things will change. Let's call it a day. This was a lot of fun. Thank you so much for being on the podcast. Appreciate it. Pleasure is mine. And thank you guys for watching. If you enjoy our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.